Hello everyone. So we will look the PYQ number 3. In a transformer, the core loss is found to be 46 watt at 50 Hz and is 80 watt at 70 Hz, both losses being measured at the same peak flux density. The hysteresis loss and the eddy current loss at 60 Hz is option A 11 watt 20 watt, option B 25 watt 35 watt, option C 20 watt 30 watt, option D 22 watt and the 40 watt. सॉल्यूशन में जाने से पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए ट्रांसफार्मर, तो ये कहाँ से आया हुआ, ये ट्रांसफार्मर से आया हुआ न्यूमेरिकल है। कहाँ पर क्या बोल रहा है, द कोर लॉस इज फाउंड टू बी 46 वाट एट 50 हर्ट्ज एंड 80 वाट एट 70 हर्ट्ज। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है, द कोर लॉस यहाँ पर दिया है 46 वाट एट 50 हर्ट्ज एंड 80 वाट एट 70 हर्ट्ज। बोथ लॉसेस मेजर्ड एट द सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम यदि यहाँ पर बोलें तो क्या बोल रहा है कि दोनों ही जो लॉसेस जो मेजर किया गया है ये सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी पर है। मतलब जो बी मैक्स होगा, बी मैक्स को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। द हिस्टेरेसिस लॉस एंड द एडी करंट लॉस एट 60 हर्ट्ज। तो हमें निकालना है हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस कहाँ पर निकालना है, एट द 60 हर्ट्ज, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन की पॉइंट है वो ये है कि जैसे क्वेश्चन में डिफाइंड है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इज सेम। सो एज पर द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस इक्वेशन वी नो दैट हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी मैक्स F into V and eddy current loss directly proportional to, we can say, the B max square F square into T square. Here I can say the B max is the maximum value of the flux density, X is the coefficient of the Steinmetz constant, F is the frequency, supply frequency, V is the volume of the magnetic material. Here B max is again same as the maximum value of the flux density, F is the supply frequency and T is the thickness of lamination. Right. So as per the question, B max is same. So B max is constant here, right? And this volume of the magnetic material and whatever the thickness of lamination we are applying here, that also a constant. So directly we can say on this particular condition as per the question, because B max is same. So we can say that the hysteresis loss, then we can say the hysteresis loss is directly proportional to frequency. Hysteresis loss is directly proportional to frequency and eddy current loss is directly proportional to frequency square. This is directly proportional to the frequency square, right? And this condition is only occurring, this hysteresis loss directly proportional to frequency and eddy current loss directly proportional to frequency square is only occurring in the case when the flux density is same, right? अब देखिए यहाँ पर आप, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि hysteresis loss will be equal to, will take the some constant of A into F and eddy current loss will take, this is the some constant term, this is given as the BF square, right? और जैसा हमको कि मालूम है, we can define the iron loss, or we can say we can define the core loss will be given as the hysteresis plus eddy current loss. So we can define this is given as, so we can define this is given as the AF plus BF square. So by putting the value in this equation we can say, जैसे हमको मालूम है 46 वाट हमको दिया हुआ है कोर लॉस, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो जहाँ पर F हम 50 हर्ट्ज पुट कर देंगे और F की वैल्यू पुट कर देंगे 50 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली हम पुट फॉर द सेकंड केस 80 वाट के लिए, तो कोर लॉस है 80 वाट और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है 70, तो हम 70 पुट कर देंगे, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर फॉर ए एंड बी, आप इसको इक्वेट कीजिएगा। सो ए इज कमिंग, आई कैन से द वैल्यू ऑफ ए, द ए इज कमिंग around 0.362 and B is coming 0.011, right, 0.011. So this is the value of A and this is the value of B, right. So now directly we'll apply this value A and B in the equation of hysteresis A into F
and eddy current loss B into F square. By putting the F value is 60 Hz, we'll get the answer. So hysteresis loss will be equal to A into F. So directly we'll put this is 0.362, then multiply supply frequency 60 Hz. So we will get something around, you can say the 22 watt. We'll get the 22 watt here. And also we can say the eddy current loss. The eddy current loss, we can say this is given as the B dot F square. So this is given, the B value is 0.01 into, this is given as the 60 square, right? So it will come around 40 watt. So this will come around 40 watt. So hysteresis loss is 22 watt and the eddy current loss is 40 watt. So this is our answer. So this is our answer. So the option D. So option D is the answer for this particular problem. I hope you have got this problem. This is very important problem, and basically just take care of this kind of problem, that about the value of the flux density. Okay, thank you.